Hi, this is Suvendu Dash, your physics mentor. So in today's class, we will discuss about the electric charges and fields, and it's the first lecture of this chapter. And this content is helpful both for CHSE and CBSE students. So from the beginning, we have to discuss about what is electrostatics. Electrostatics, it is a combination of two things, that is your electro, which means electric charge. Another one is statics. Statics means at rest. So basically you all remember that electrostatics is the study of electric charge at rest so it is called static electricity. Okay, so what do we mean by electric charge? Our first concept is electric charge. So what is the meaning of electric charge? Remember, electric charge is the intrinsic fundamental property. So give heading electric charge. So it is the intrinsic means very fundamental or preliminary, intrinsic fundamental property of matter that causes it to experience a force when placed in an electromagnetic field. Remember, I know you don't know about what is electromagnetic field, and it will be discussed in chapter number 8 actually. So electromagnetic field is a combination of electric field and magnetic field. And remember, when matter is placed in electromagnetic field and if it experiences some force, that means it experiences some force because of the presence of electric charge within it. Okay, so कौन सी भी मैटर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भीतर रही किसी गोटे फोर्स एक्सपीरियंस करिवो, द रीजन बिहाइंड दैट फोर्स इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ चार्ज इन इट. ओके, सो it is a scalar quantity. Remember, electric charge is a scalar quantity. Okay, next its representation. Remember, you can represent electric charge in capital Q or small q. Next is its dimension. Dimension of electric charge, that is A1 T1, or you may write it as M0 L0 T1 A1. I hope it is clear. Then its unit. Okay, so in SI, you remember unit of charge is coulomb, represented by capital C. Then in ESU means electrostatic unit. Unit of charge is stat coulomb. And in EMU means electromagnetic unit. Its unit is amp coulomb. Now all of you remember the relationship between these three things, coulomb, stat coulomb and amp coulomb, is 1 coulomb is equals to 3 into 10 to the power 9 stat coulomb
that is equals to 1 by 10 half coulomb. In numerical it will help us. Okay, so just write for hints ESU, it means electrostatic unit, and EMU, it means electromagnetic unit. Okay, and for reference you may remember other units. Suppose millicoulomb means 10 to the power minus 3 coulomb. Then microcoulomb, that means 10 to the power minus 6 coulomb. Nanocoulomb, that is 10 to the power minus 9 coulomb, like this. Okay, next is about types of charge. Types of electric charge. Okay, so remember two names, that is your Charles Duffy, another one is Benjamin Franklin. Okay, so who is Charles Duffy? Remember, Charles Duffy suggested there are two kinds of charges in nature, but Benjamin Franklin named these two types of charges as positive and negative charge. Named these two kinds of charges as positive and negative charge. आज ये होल लेक्चर में ओनली इलेक्ट्रिक चार्ज विषय डिस्कसन करिबा. ओके, फ्रॉम द बिगिनिंग तुम कहि सारछि दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर बोथ सीबीएसई एंड सीएचएसई स्टूडेंट्स. ओके, यस, नेक्स्ट come to, now you can write all these things, you may take the screenshot. Next is about its representation, dimension and unit. Third one is your other types of unit, then types of electric charge. Okay, next come to Franklin experiment. Yes, so what is that? Now see, Franklin experiment. Listen to this experiment properly. So in Franklin experiment, let us consider two glass rods. These are two glass rods. Yes, this is your glass rod 1 and this is your glass rod 2. So these are two neutral identical glass rod. एंड ताको जदि आम साइड व्यू देखा, ये आम फ्रंट व्यू देखले, सो साइड व्यू देखले आम कौन देखा जस्ट लाइक दिस. एंड ये दुटा ग्लास रोड को आम कौन कर बर्तमान, दिस इज ग्लास रोड 1, ग्लास रोड 2. सो बोथ आर नाउ सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट. यस, व्हेन दे आर इन न्यूट्रल कंडीशन आम ये टाइप कॉन्सेप्ट देखा. बोथ सेकेंड डायग्राम शोज दैट both neutral glass rod suspended from a common point. Yes, now what we have to do, glass rod को हमें silk cloth से rub करिबा. Next condition is when glass rod rubbed against or rubbed with silk cloth,
कौन देखिले आम दिस इज द ग्लास रड 1 दिस इज ग्लास रड 2 ताको आम सिल्क क्लथ दिस इज ग्लास रड 1 एंड ग्लास रड 2 ताको सिल्क क्लथ सहित रब करवा बस सिल्क क्लथ सो व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस देखा गला ए ग्लास रड 1 एंड 2 चार्ज हो गले दिस इज ग्लास रड 1 अनदर वन इज ग्लास रड 2 नाउ केमती चार्ज बढ़ी हेले पॉजिटिवली चार्ज्ड okay this is also positively charged so this is glass rod 1 dash G1 dash this is G2 dash now G1 dash और G2 dash को हम यदि सेमती फ्रीली सस्पेंडेड करवा कौन देखिले आम देख व्हेन दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट इनिशियली केतले न्यूट्रल थिला बेले से अटैच मोमेंट रे थिले नाउ आफ्टर चार्जिंग G1 dash and G2 dash both exerts a repulsive force on each other. This is your repulsive force. Yes. Initially कौन थिला ग्लास रड 1 ग्लास रड 2 न्यूट्रल थिले सो तार साइड व्यू देखिले आमे when both are suspended from a common point both neutral glass rod suspended from a common point so an empty attached होई थिले now after rubbing with glass rubbing with silk cloth so कौन है both exerts repulsive force on each other and they becomes positively charged body अच्छा बर्तमान आम डाउट आसला why glass rod become positively charged body negative charge body भी हो पारि था okay it will be discussed wait okay next this is your one experiment that is Franklin experiment 1 okay let it be experiment 1 keep heading this is our experiment 1 so come to experiment 2 okay I hope it is clear this is experiment 1 you can take the screenshot experiment 1 okay next come to experiment 2 experiment 2 रे हम क्या नवा देखो now consider two neutral identical plastic rod this is two neutral identical plastic rod this is suppose P1 P2 so these are two neutral identical plastic rod yes अच्छा तांको यदि आम कॉमन पॉइंट रू सस्पेंड करी देखिबा व्हेन दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट आम सेम फिगर देखिबा just like the previous in case of glass rod bas this is your P1 this is plastic rod 2 suspended from a common point yes bas now what we have to do when plastic rod is rubbed with woolen cloth now we have to rub two plastic rod with woolen cloth so when plastic rod is rubbed with woolen cloth अच्छा कौन देखिए ये this is your plastic rod 1 plastic rod 2 plastic rod 1 and plastic rod 2 then it is rubbed with woolen cloth okay so what will happen after this both the plastic rod कौन है चार्ज बोर्ड रे कन्वर्ट हो जाए को चार्ज बोर्ड है माने now they will become negatively charged body this is plastic rod 1 dash this is P2 dash so negatively charged this is also negatively charged okay now कौन करिया हमें प्लास्टिक रड 1 dash and 2 dash को हमें
जिते सस्पेंड करवा फ्रीली सस्पेंड करवा फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट then we will observe they starts to repel each other as per the figure. Okay, when they are suspended from a common point, this is your P1 dash, this is plastic rod 2 dash. Now they exert repulsive force upon each other. अच्छा, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कौन सीखिले? When glass rod is allowed to rub with silk cloth, it becomes positively charged body, and when plastic rod is allowed to rub with woolen cloth, it becomes negatively charged body. अच्छा, so why it is happening like this? Okay, the reason is inside the concept of work function. So wait, so from these two experiments we came to know that there are two types of charged body, that is positively charged body and negatively charged body. Now you note it down, types of charge, that is positive charge, another one is negative charge. Okay, so what is the meaning of positive charge? Remember, positive charge means it is the deficiency of electron. It is the deficiency of electron as compared to proton. Okay, so we can represent Q negative is less than Q positive. Okay, the result is positively charged body. Bas. Then what is negative charge? It means it is the excess of electron as compared to proton. It means Q negative is greater than Q positive. So the result is negatively charged body. I hope it is clear to all of you. Now we will discuss about work function. Now आमे वर्तमान बेसिक रीजन जानबे जे आफ्टर रबिंग ग्लास रॉड कोन पाई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हला एंड प्लास्टिक रॉड कोन पाई नेगेटिवली चार्ज बॉडी हला. ओके, सो देखो नेक्स्ट कांसेप्ट इज आवर वर्क फंक्शन. All of you try to note it down. Note all these things. Whatever I am going to discuss, okay, try to write in a copy in a very systematic manner so that you can understand the concepts. And सदाବେଳେ ट्राए करो गोटे सीरीज को कंप्लीट करने पाई. कंप्लीटली देख सीरीज गोटे चैप्टर इजिली बुझीपर कारण आपको बहुत सारा जिन अच्छी प्रिंसिपल ऑफ सुपर कूलम्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, okay, axial line, equatorial line, electric field intensity, and area vector, electric flux, Gauss theorem. These are very very important concept. Okay, and मैं ट्राई करी जो बहुत सारा न्यूमेरिकल तुमको सॉल्व करी शो करी. वर्क फंक्शन. व्हाट इज वर्क फंक्शन? रिमेंबर, वर्क फंक्शन is denoted by the letter phi, or you may denote it as phi naught also, or let us phi. So what is work function? It is the minimum amount of energy required to remove or eject an electron from surface of metal. Okay, from surface of metal. Yes, देखो ये डाला हमरो न्यूक्लियस. This is nucleus, and inside nucleus proton and neutrons are available, and this is the orbit in which electron is revolving. Yes, and this green color represents nucleus. अच्छा, this is your outermost orbit electron.
Yes. So remember, actually हुए कौन एठी जो ग्लास रड सिल्क सहित रब है सो कौन है से ग्लास रड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के हम आम डिस्कस कले पॉजिटिव चार्ज मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स ड्यूरिंग रबिंग आम जो एनर्जी ट्रांसफर करुचे बहुत बॉडी को रबिंग केस दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन ओके सो सही टाइम रे कौन हुए इजिली आमर ग्लास रड आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन ग्लास रड जो आटम अच्छी ना तार आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इजिली इजेक्ट हो जाए बिकॉज वर्क फंक्शन ऑफ ग्लास रड is less than, or in symbol you may write it like this, work function of glass rod is less than work function of silk, and due to this reason our glass rod कौन होगा glass rod becomes positively charged body, which implies glass rod becomes positively charged body. Yes. Second thing, plastic rod and woolen cloth आम रब कले सो ये कौन है कह वर्क फंक्शन ऑफ प्लास्टिक रड वन इज वर्क फंक्शन ऑफ वूलन क्लॉथ ये आम कंपेयर करवा कौन देखिले प्लास्टिक रड आम कौन है बिकम्स नेगेटिवली चार्ज बॉडी दैट मीन्स वूलन क्लॉथ वर्क फंक्शन कौन अच्छी लेस अच्छी एंड प्लास्टिक रड वर्क फंक्शन ग्रेटर से आम कौन है वूलन क्लॉथ बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड प्लास्टिक रड बिकम्स which implies plastic rod becomes negatively charged body. I hope it is clear. So हमें कौन मीनिंग लिख ले minimum amount of energy required to remove an electron from surface of a metal. Yes. So from this we came to know substance having low work function, substance having low work function, that means it loses electron easily, yes, and becomes positively charged body, yes, and becomes positively charged body. I hope it is clear to all of you. This is about your work function. सो आम जो गोटे टेबुल मन रखा आम जापर आफ्टर रबिंग व्हिच सब्सटेंस गेट्स पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड व्हिच वन विल बिकम नेगेटिवली चार्ज बॉडी ओके सो रिमेंबर दिस टेबल सो इन लेफ्ट साइड आई एम राइटिंग पॉजिटिव चार्ज बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी another one is negatively charged body. So हमें दीटा पेयर ऑलरेडी मन रख सारे वन इज योर ग्लास रड अनदर वन इज सिल्क क्लॉथ yes second one is woolen cloth and its pair is plastic cloth or plastic object next is your dry hair comb, next your wood teflon, and for ebonite rod. Yes, that means याकू मन रखला तुम जानी पारे आफ्टर रबिंग व्हिच वन विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड व्हिच वन विल बिकम negatively charged body. Yes, next come to gold leaf electroscope. Gold leaf electroscope यार काम कौन देखो it is a very small concept actually. Gold leaf electroscope actually ये कौन सो करिवो presence of charge on a body खाली डिटेक्ट करिवो ओके इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी. यस हाउ देखो एटा केमती तैयारी हुए
एटा गोटे करूँ डायग्राम तापर मुझे तुमको एक्सप्लेन करदेवी। Yes, this is the diagram, and here a negatively charged body is there. Actually in this figure if mark kariba, this is your metallic knob, this is metallic knob, another one is this is your metal rod, okay, and this is your rubber stopper, and third thing is this one is your gold leaf. Yes, highly flexible, बहुत पतला थी बड़ा, highly flexible. Yes, and this one is your evacuated glass chamber. Yes, ये टाइम रे कौन करिया गोटे नेगेटिव चार्ज बॉडी को हम जदि आनी टच कर दबा देखा जाउछि नेगेटिव चार्ज बॉडी, दिस इज योर नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। गोटे नेगेटिव चार्ज बॉडी आनी मेटालिक नॉब सहित टच कला माने, ओके, सो ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन हमर गोल्ड लीफ रे कोन हेबे नेगेटिव चार्ज अपियर हेबे, बुझेला, एंड लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर। सो बर्तमान कोन हबो, बर्तमान देखिबा जे दीटा गोल्ड लीफ starts to diverge away from each other. Two thin gold leaves starts to diverge away from each other. मन रख जिते अधिक अमाउंट नेगेटिव चार्ज थी ना से अधिक डाइवर्जेंस हम मनकर कम अमाउंट नेगेटिव चार्ज अच्छी सो डाइवर्जेंस विल बी लाइक दिस, बेसी नेगेटिव चार्ज अच्छी बस, तो दैट मीन्स द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस गिव्स द आइडिया अबाउट प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी. So last line we can write, we may write in this case what the degree of divergence in gold leaves gives an idea about presence of charge on a body. आज आम फास्ट लेक्चर एटा, सो इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट तो रही निहाती अबाउट चार्ज. नेक्स्ट को आम तार कंडक्शन इंडक्शन प्रोसेस तार न्यूमेरिकल ओके सर सब डिस्कसन होपर आम आसो कुलम्स लॉ along with numerical. Sufficient numerical I will solve. Okay, next is our properties and characteristics of charge. So first we will discuss about the characteristics of charge. Okay, या को screenshot नहीं जाओ, gold leaf electroscope. Next is characteristics of charge. Yes, so characteristics हम कौन पढ़िबा. Okay, first point you have to know about the basic things regarding charge, that is your characteristics. Then we will discuss property. Yes, so first characteristics is electric charges are of two types. Both simple characteristics. Electric charges are of two types, that is positive and negative as per Benjamin Franklin. Next, like charges repel and unlike charges attract each other.
Okay, next, like charges means similar charge. So positive, positive, that means repulsive force. Then negative, negative, that is also repulsive force. Okay, then positive, negative means unlike charges, or negative, positive, this means attractive force. I hope it is clear. Next is our third property, third characteristics. Charges are transferable. Okay, next come to fourth one. Fourth one is charge is invariant. This is very important point. Charge is invariant. Okay, what is the meaning of invariant? That is, it does not, that means charge does not depend upon velocity. Invariant means charge does not depend upon velocity. कहबार मीनिंग है चार्ज एट रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज इन मोशन. बट आम जब मास सहित कंपेयर करवा, रिमेंबर बट मास इज वेरिएंट. मास इज वेरिएंट. हायर स्टडी विषय डिटेल स्टडी कर तुम. मास इज वेरिएंट मीन्स मास एट रेस्ट इज नॉट इक्वल टू मास इन मोशन. गोटे बॉडीर मास टा रेस्ट जहाँ मोशन से न हो पारे. ओके, मे और मे नॉट बी. सो केते कंडीशन साटिस्फाई हे देख मुझे एक्सप्लेन करुँची. ओके, आम हायर क्लास पढ़ो आइनस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. सो से कहले कौन देख, आइनस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कौन शिखल. तो गोटे फर्मूला है आमर एम इज इक्वल्स टू एम नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर रूट ओवर. दिस इज दैट फर्मूला. ये फर्मूला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम नॉट and what is the meaning of v and what is the meaning of c. Now see, एटी मन रख, m naught means it is the rest mass of body. It is a rest mass of body. And what is v? V means it is the speed of body. Speed of the body. And what is c? C means it is the speed of light. सो आइनस्टाइन कौन कहले, जदि गोटे ऑब्जेक्ट और बॉडी जहाँ भी जो लाइटर स्पीड रे मूव कर कि तार कंपेरेबल स्पीड रे मूव कर, मैंने लाइटर पाखापाखि स्पीड रे मूव कर, इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. से कहले इफ इट विल हैपन देन मास ऑफ द बॉडी स्लाइटली इंक्रीजेस. देखो यही फॉर्मूलार एक्सप्लेनेशन रे केमती तुमको एक्सप्लेन कर, जस्ट सी. लेंथी नो, गोटे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन. Let speed of the body v is equals to c by 2. लाइटर स्पीड जी तार हाफ स्पीड रे, दैट मीन्स 3/2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. और यू मे से 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड रे गोटे कौन ऑब्जेक्ट मूव कर. ओके, दैट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁸ नियरली इक्वल टू मीटर पर सेकेंड. ओके, जदि है ताले मास रो वैल्यू केते हो, m इज इक्वल्स टू m नॉट as per the previous formula divided by 1 minus v by 2, sorry, v square. V square means c by 2 whole square divided by c square, then its root over. Yes, so it will become m naught divided by 1 minus c square by 4c square. कैलकुलेशन बुझेगा. तो सी स्क्वायर कैंसल हो गला. बर्तमान आमर आसला के एम नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/4 रूट ओवर. दैट मीन्स एम नॉट डिवाइडेड बाय 3/4 रूट ओवर. एंड 3/4 रूट ओवर मीन्स √3/2. सो एम नॉट डिवाइडेड बाय √3/2. सो इट विल बिकम 2m नॉट डिवाइडेड बाय √3. सो जब आम वैल्यू पुट करवा 2/√3 रो वैल्यू 1.732 इंटू m नॉट. सो
यार कैलकुलेशन के 2 डिवाइड बाय 1.732 यू रिमेंबर इट विल नियरली इक्वल टू 1.15 एम नॉट। तो कहार वैल्यू मिलला 1.15 ये कैलकुलेशन को देखो ठीक से एम नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर रूट ओवर से ही फॉर्मूला यूज कराला। ओके सो आम पाइले थ्रू एम इज इक्वल्स टू 1.15 एम नॉट दैट मीन्स कौन है एम इज ग्रेटर दैन एम नॉट। So this is in accordance to Einstein theory of relativity. So आम लिखिपर ये just simply आम हिंट दे परिबा as per Einstein theory of relativity, when a body moves with a speed which is comparable with speed of light, then its mass increases. Bas. And as per this concept, this is the formula. Jana bola? Is it clear? Bas. So this is about the characteristics of charge. Acha. Next is 5th number characteristics. It is very important. All of you remember this point. Okay. What is that? First is आम देखिले चार्ज। चार्ज कौन हो पारे रेस्ट रही पारे किंबा मोशन भी आस पारे। ओके सपोज थिंक दैट चार्ज इज एट रेस्ट। रिमेंबर दिस थिंग सपोज क्यू इज एट रेस्ट। क्यू इज एट रेस्ट। क्यू इज एट रेस्ट मीन्स static. Rest rather name static. So remember when charge is at rest it produces electric field only. It produces electric field only. Copy रे को highlight करी रखियो. It is very very important. Okay. Now we will discuss when charge is in motion. When charge is in motion. Okay. Charge in motion. Yes. So Q in motion. Okay. So when Q is in motion, what will happen? Remember, a motion में दुईटा कंडीशन विषय में पाठ पढ़ा कौन गोटे है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन अनदर वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके आम जाने इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इट मीन्स यूनिफॉर्म मोशन एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0। रिमेंबर in this case and non-uniform motion acceleration not equal to 0. So it dita point tome truly मन रखो when acceleration is equal to 0 that means charge is in uniform motion. So charge produces both electric and magnetic field. Yes, but when acceleration not equal to 0 that means non-uniform motion. एठी कौन हम charge produces yes electric field, that is true. Yes, then magnetic field, yes this is true, and radiates some energy. Okay, so keep all these things in mind. When charge is at rest it produces electric field only. When charge is in motion it may be uniform motion or non-uniform motion. Under uniform motion it produces electric field as well as magnetic field, and under non-uniform motion it produces electric field, magnetic field and radiates some energy. And तीनटा को केस रे हम देखिले होल टेबल रे हम कोन जज कले चार्ज जे कोन सी कंडीशन रे थाओ चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. I hope
it is clear. Yes. Okay, next come to properties of charge. हम बर्तमान सीबीएसई एनसीईआरटी बुक रे तीनटा प्रॉपर्टी देछि ताकू डिस्कशन करिबा. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. अप टू दिस आई होप इट इज क्लियर. So this is your number 5 characteristics. In number 6, another property you can say charge is not possible without mass. Charge is not possible without mass. Yes, but mass with or without charge is possible. यार मीनिंग कौन देखो, मास विथ और विदाउट चार्ज इज पॉसिबल. यस, देखो न्यूट्रन रो चार्ज ना किसी, न्यूट्रन रो चार्ज 0 बट मास अच्छी, बट इलेक्ट्रॉन रो चार्ज अच्छी मास अच्छी. दैट मीन्स मास विथ और विदाउट चार्ज इज पॉसिबल, बट चार्ज इज नॉट पॉसिबल विदाउट मास. बुझला. एग्जांपल फोटोन, यू मे रेफर टू फोटोन. यस. ओके, नेक्स्ट कम टू, अच्छा आम चार्ज और मास रो डिफरेंस भी लिखिपार. ओके, आग सरी जाऊ आमर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देन आई विल डिस्कस इट. सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज आवर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. Yes, first property, charge is additive in nature. Okay, charge is additive in nature. Yes, your meaning कौन देखो. That means charges are added just like real numbers. Yes, so total charge, we can say total charge on a body is the algebraic sum of charges located at different points. On it. Okay, suppose just think it is a body, या भीतर हमें चार्ज अच्छी केमती देखो, these are the charges. Yes, बस. अच्छा, केते चार्ज अच्छी, लेट दिस इज योर +2 coulomb and here is -5 coulomb, then +6 coulomb, +3 coulomb, -9 coulomb and +5 coulomb, +1 coulomb and +4 coulomb. যদি এটু পচারি এই বডির টোটাল চার্জ কেতে, what is the total charge? That means Q total equal to, simply you have to add 2 -5 +6 +3 +1, then -9 +5 +4. So if you will solve, it will become +8 coulomb. Yes, +8 coulomb. So this is the total charge present in this system or body. Clear? Okay, that means in general आम कही परिबा, if this is a body, एतर चार्ज अच्छी Q1 -Q2 Q3, okay, up to Qn. So we can say Q total is equals to Q1 plus -Q2 plus Q3 up to Qn. Okay, this is about your
additive property of charge. Okay, I hope it is clear. Next one is charge is conserved. Next property, charge is conserved. Second property is charge is conserved. Conserved means constant. Conserved means constant. So कौन कहना चाहूँ charge can neither be created nor be destroyed. Okay, and it can only be transferred from one body to other body. The total charge of an isolated system always remains constant. Okay, this is about conservation of charge. This is your conservation of charge. Second property is about conservation of charge. For example, I am the explanation को. For example, you may think like this: NaCl और कौन हम dissociation पर ionization, after ionization Na plus plus Cl minus. That means you remember before ionization Q total is equal to 0, and after ionization also Q total is 0. Yes. Next is example 2, annihilation of charge. ये विषय में आगे पढ़ा annihilation of charge बहुत आगुआ concept अच्छी, but for example I am going to write, so don't be panic. So E plus means proton plus E minus electron. So when combined लेले कौन हो 2 gamma ray photon. Just for example, you keep it in mind, nothing is there to be worry about this. So this is your proton and this one is electron. Yes, बस एटा गामा. ये सब पार्टिकल विषय में आगू पढ़ा. एथर आउ कौन हुए प्लस 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो. जस्ट फॉर एग्जांपल यू कीप इट इन माइंड. ओके, बारंबार कहूँ. सो बिफोर द प्रोसेस टोटल चार्ज केते 0 एंड गामा रो चार्ज केते 0. सो क्यू टोटल इज 0. So next is example 3. This is about example number 2. Example 3. Yes, pair production. एथरे कौन हम. सो गामा एथरे स्प्लिट हम ना, तो बाहर कौन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन. दैट इज योर क्यू टोटल बिफोर द प्रोसेस इज 0 एंड आफ्टर द प्रोसेस क्यू टोटल इज 0. आमर मोटिव कौन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को एस्टाब्लिश करवा. तो ये जिते सब रिएक्शन लिखुची ना एलएचएस साइड एंड आरएचएस साइड तुम देख टोटल चार्ज बिफोर द प्रोसेस एंड टोटल चार्ज आफ्टर द प्रोसेस रिमेन्स सेम. बुझेगा. सपोज लास्ट एग्जांपल हम देखा एग्जांपल नंबर 4 बीटा डीके. किसी ना रिएक्शन खाली मन रखी था. ओके, फर्स्ट वन इज अबाउट आयोनाइजेशन, next annihilation, pair production, another one is beta decay. So what is happening in beta decay? Neutron N01 सेतले बर्तन स्प्लिट है कौन की प्रोटॉन P11 प्लस इलेक्ट्रॉन -10 प्लस एंटी न्यूट्रिनो
its symbol is like this, plus Q means some energy. So here N is your neutron and this is your proton, this one is electron, third one is antineutrino, and Q means some energy. Okay, देखो before the process total charge 0, after the process 1 minus 1, 1 plus minus 1, that is 0. So Q total before decay, we can say Q total before decay, that is equal to 0, and Q total after decay is equal to 0. Okay, I hope it is clear to all of you. Next, that is the last property of charge. First one is your additive nature of charge, next one is conservation of charge, third one is quantization of charge. It is very interesting topic, quantization of third property. Third property is our quantization of charge, that is quantization of charge. ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को पढ़ा पूर्व मुझे तुमको गोटे एग्जांपल दूसरी ताको भलसे शुण, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कॉन्सेप्ट इन ए वेरी इजी मैनर. यस, ओके, कौन से कॉन्सेप्ट मुझे कहूँ, किसी कॉन्सेप्ट ना, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज मुझे कहूँ. आम होटेल को 3 जन सांग जाइए एंड से किसी को भल लगे कौन बरा खाया भल लगे, आउ किसी मानक बरा भल लगे, बस ये होटेल रे खाली बरा ही ऑर्डर दे हेबो, अलग किसी ऑर्डर दे परिबो नाही. यस, जदि आम बरा 3 जन जाक कौन कले बरा ऑर्डर देले, जहाँ को बहुत भल लगुच बरा, से कौन कला 3 नंबर प्लेटा को बरा भल लगे, सो से बरा ऑर्डर कला. देख ओके, 7टा बरा ऑर्डर कला. सेकेंड प्लेटा को कौन ला ताको एवरेज बरा एते खास लगे, से 3टा बरा ऑर्डर कला, जहाँ को आदम बरा भल लगे, आउ से होटेल रे किसी मिलूनी, केवल बरा ही अच्छी. से मिनिमम केतेटा बरा ऑर्डर कर परिबो, मिनिमम गोटे बरा से ऑर्डर कर परिबो. ओके, सो कहर अर्थ है देख ये मिनिमम अमाउंट ऑफ बरा केते गोटे ही बरा रहिबो मिनिमम. सो मु कौन कहू चाहूँ, देख एग्जांपल रे एटा 1 बरा, ये प्लेट अच्छी 1 बरा. यस, अच्छा, सेकेंड प्लेट रे केतेटा बरा अच्छी, 3टा अच्छी, से आम लिखिपर 3 into 1 बरा. एंड थर्ड प्लेट रे केतेटा अच्छी, 7टा अच्छी, सो 7 into 1 बरा. यस, तो मैंने ये गोटे भल कनसेप्ट पाइले, होटेल प्रिमिसेस भितर हाफ बरार भी टेस्ट से सेम टेस्ट, हाफ बरा हाज सेम टेस्ट, बट तार फ्री एक्जिस्टेंस नहीं कौटी इनसाइड होटेल प्रिमिसेस. ओके, तो मैंने मिनिमम केतेटा बरार फ्री एक्जिस्टेंस रहा गोटे. सो ये लिखा, रिमेंबर मिनिमम अमाउंट ऑफ बरा which has free existence in nature, free existence inside hotel premises, inside hotel premises is called what? Quantum of bara, or it is called elementary bara. मैं अंडरस्टैंडिंग कहूँ, जस्ट फॉर कॉमेडी, तुम शुण ठीक से भल लगे. सेकेंड गोटे कनक्लूजन आम कौन देखिले, यहाँ फास्ट पॉइंट देखिले. देन वी विल डिस्कस बरा अवेलेबल ऑन ऑल अदर प्लेट्स. बढ़िया कॉन्सेप्ट कौन देखिले, बराज ऑन ऑल अदर प्लेट्स आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंटरी बरा. देख जिते सब प्लेट अच्छी, जिते बरा अच्छी ना, सब एलिमेंटरी बरार मल्टीपल हिसाब से अच्छा. सो आम सेकेंड पॉइंट लिखिपर बराज अवेलेबल ऑन ऑल अदर प्लेट्स is an integral multiple of
एलिमेंटरी बरा ओके एंड रिमेंबर यही कॉन्सेप्ट को कह जाए तुम क्वांटाइजेशन ऑफ बरा दिस इज योर क्वांटाइजेशन ऑफ बरा सो लाइक दिस आम बर्तमान पाठ को आसवा ये बुझिपाल क्वांटाइजेशन ऑफ बरा कॉन्सेप्ट नाउ वी विल एक्जाक्टली डिस्कस रिगार्डिंग योर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ओके आई होप टिके इंटरेस्टिंग थिला तुम बुझी समहाउ जेके पिला बुझिपार से एग्जाम्पलटा ओके मु पढ़ला बेले भी मो टीचर ये एग्जाम्पल देते मो +3 टाइम कथा कहूँ ग्रेजुएशन टाइम से सार जदि केतले रेकर्डिंग देखिए से निहाती मन पकई पारे ओके सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ओके so quantization of charge means first we will discuss about elementary charge okay elementary charge what is that the minimum amount of charge which has free existence in nature is called quantum of charge or you can say elementary charge yes it is represented by E तो तार value केते remember its value is equal to the magnitude of charge on an electron yes then E रो value लिखिबा elementary charge रो value it will be 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb yes अच्छा तो हमें कन्वर्ट कर परिबा ESU and EMU यूनिट रे केमती देखो E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 1 coulomb means 3 into 10 to the power 9 start coulomb yes so this is equal to E is equal to 1.6 into 3 that is 4.8 so 4.8 into 10 to the power minus 10 start coulomb yes bas अच्छा in electromagnetic unit E is equal to 1.6 into 10 to the minus 19 1 coulomb means 1 by 10 half coulomb so it will be E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 20 half coulomb okay I hope it is clear अच्छा बर्तमान पढ़िया एटा what elementary charge or quantum of charge concept next what is quantization of charge same as previous line bora is available on all other plates is an integral multiple of elementary bora okay we can say the total charge available on a body the total charge available on a body is equal to the integral multiple of charge on an electron एमती कह परिबा और instead of this line integral multiple of elementary charge जेन तुम कहते elementary बोरा elementary charge this is your quantization of charge okay so in nature केते टाइप ऑफ चार्ज बॉडी प्रेजेंट अच्छी टू टाइप्स दैट इज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड नेगेटिवली चार्ज बॉडी यदि हम ताको फोकस करवा दिस इज अबाउट योर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लास्ट स्टेटमेंट ओके दिस इज एलिमेंटरी चार्ज आई होप इट इज क्लियर अच्छा जब हम चार्ज बॉडी कॉन्सेप्ट को जीवा चार्ज बॉडी इट मे बी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और नेगेटिवली चार्ज बॉडी अच्छा आम जीवा पॉजिटिव चार्ज बॉडी देखो पॉजिटिवली
चार्ज बॉडी अनदर इज नेगेटिवली चार्ज बॉडी। अच्छा जिते नेचर में जिते टाइप पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अच्छी सब मिनिमम पॉजिटिव चार्ज के प्लस ई देन +2e or it may be +3e, okay, like this we can say plus ne in general. Okay, in case of negatively charged body -e, -2e, -3e, and in general it can be written -ne. That means charge on a body, thus for a charged body likhi means both, it includes both positive and negative charge body. So for a charged body, remember Q is equals to plus minus Ne. Yes, yes. And remember what is N. In this case, what is N? N means number of electron lost or gained. Number of electron lost or gained. Yes. So what a number line मन रखो एटा हम कहूँ शुभेन्दु लाइन जो कि हमें न्यूमेरिकल हेल्प करिवो कोन दिस इज दैट लाइन यस एंड हियर आई एम मार्किंग इट एज 0 कूलम नेक्स्ट 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम हियर -1 कूलम -2 कूलम -3 कूलम। अच्छा जदि हमें टुवर्ड्स राइट साइड को मूव करवा पॉजिटिव चार्ज बढ़ी बढ़ी चलला ना अमाउंटा तो मैंने कौन है पॉजिटिविटी इनक्रीज हो नेगेटिविटी ताथरू कौन मैंने कौन है डिक्रीज होती लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आरो मार्क रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड जीवा वी कैन से गेन इन इलेक्ट्रॉन ओके बस। सो आम ये देखले कौन Q is equals to plus minus Ne, capital Q लिखो कि स्मॉल q लिखो किसी नहीं। यस सो दिस इज अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट अच्छी देख कहूँ 1 by 1 1 आवर होगला इच लेक्चर नियरली 1 आवर पाखी रखी जेहेतु क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कंटिन्यू होची तब आम फिनिश करवा या रिलेटेड न्यूमेरिकल आम नेक्स्ट सीरीज रे लेक्चर 2 रे मु स्टार्ट करी। ओके सो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग आ 5 to 10 मिनिट्स आम कंटिन्यू करवा। सो Q is equals to plus minus Ne. Q is equals to plus minus Ne. Quantization of charge. So remember this quantization of charge. This quantization of charge holds good in microscopic level. Holds good in microscopic. तो हम अप्लाई कर परिबा माइक्रोस्कोपिक लेवल रे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अप्लाई करि परिबा। यस एंड इट डज नॉट होल्ड गुड इन मैक्रोस्कोपिक लेवल। ताले कौन हुए एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक या मैक्रोस्कोपी रे हुए कौन माइक्रो मैक्रो बुझी पारछ ना माइक्रो कौन मैक्रो कौन देखो माइक्रोस्कोपिक लेवल एंड मैक्रोस्कोपिक लेवल। यस मोर देख गोटे बॉक्स भितर मुझे केतटा डॉट देली तुम काउंट करी कह 1 2 3 4 5 6 7 7टा डॉट अच्छी। यस अच्छा सेम मुझे गोटे बॉक्स कहूँ ये बॉक्स भितर मुझे 7टा डॉट देवी जस्ट तुम देख आम से 7टा डॉट देवा 1 2 3 4 5 6 7। यस now all of you observe this thing यदि आम ऑब्जर्व करवा देख ताकू जो कंडीशन ऑब्जर्व कर कौन देखा फास्ट डायग्राम रे डिस्क्रीट थिंग्स आर अवेलेबल डिस्क्रीट माने आम डिस्टिंग्विश कर पॉइंट टू पॉइंट बट सेकेंड रे कौन देखा सीम्स टू बी ए स्ट्रेट लाइन आम कौन लगुच यहाँ गोटे स्ट्रेट लाइन भाई लगुच ठीक कथा यहाँ गोटे स्ट्रेट लाइन भाई फिलिंग्स दूसरी। सो यहाँ मन रख माइक्रोस्कोपिक लेवल रे डिस्क्रीट थिंग्स आम ऑब्जर्व करें डिस्क्रीट दिस इज डिस्क्रीट okay and this is called continuous that means seems to be a straight line seems to be a straight line so मैं कौन कहूँ चाहूँ देखा एक्चुअली it seems to be a straight line
yes. So remember कौन पाई सेटा मैक्रोस्कोपिक रे काम देबनी माइक्रोस्कोप रे देबो माइक्रोस्कोप रे चार्जेस आर डिस्क्रीट बट इन मैक्रोस्कोपिक लेवल यू रिमेंबर आज रीजन कौन आज इन मैक्रोस्कोपिक लेवल n is much greater than e एलिमेंटरी चार्ज और इलेक्ट्रॉन वैल्यू जहाँ भी कह ताठू कौन हो नंबर ऑफ चार्ज रो वैल्यूटा बहुत ग्रेटर सो n इज very large ओके एंड e becomes very small बस क्लासरूम रे हमें 40 जन पिला बसचे दैट इज डिस्क्रीट क्लियर बट से 40टा पिला जदि किए प्लेन रू ऑब्जर्व कर गोटे ग्राउंड रे ठिया 40टा पिला 40 स्टूडेंट्स आर इन ग्राउंड ओके जदि आम कौन सर्टन हाइट रू गोटे लार्ज हाइट रू ऑब्जर्व करवा तो कौन देखा गोटे कंबाइंड ग्रुप देखा गोटे ग्रुप हो देखा से तुम कंटिन्यूअस ओके पाखुर देखले डिस्क्रीट देखा सो बिकज ऑफ दिस रीजन तुम लिखिपर कौन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज डज नॉट होल्ड गुड इन मैक्रोस्कोपिक लेवल इट इज वेरी इंपोर्टेंट कीप इट इन माइंड यस सो बर्तमान तुम किसी डाटा मन रख नोट दैट इज योर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के -1.6 10 to the power -19 coulomb then charge of proton +1.6 into 10 to the power -19 coulomb then mass of electron 9.1 10 to the power -31 kg okay and mass of proton 1.67 into 10 to the power -27 kg yes बस so बस सो आम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सरला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज रिलेटेड जहाँ भी न्यूमेरिकल आम नेक्स्ट क्लास देखा नेक्स्ट क्लास आम पढ़ा कौन मेथड्स ऑफ चार्जिंग ओके एंड क्वांटाइजेशन तार न्यूमेरिकल चार्जिंग केस भी आम न्यूमेरिकल अच्छी लास्ट पार्ट आम जा आज लेक्चर 1 रो डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास ओके सो गिव हेडिंग डिफरेंस बिटवीन 5 minutes मोर difference between each lecture nearly amaro 1 hour पाखा रहिबो difference between charge and mass okay day to day I will try my best to upload the content systematically so that it will be helpful for you all to learn the concept so one is charge and in right hand side you have to write mass same as previous procedure आम तो एमती डिफरेंस लिखा ना सो फर्स्ट पॉइंट कौन इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड इन फर्स्ट पॉइंट यू कैन राइट इट इज ऑलवेज पॉजिटिव मास इज ऑलवेज पॉजिटिव ओके देन चार्ज इज कंजर्व्ड बट मास इज नॉट कंजर्व्ड ओके कौन पाई बिकॉज मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी एंड वाइस वर्सा so we can say charge is conserved and in second point mass is not conserved that is it can be converted into energy and vice versa okay next come to your third point is what charge is quantized just we have discussed charge is quantized but remember quantization of mass yet to be established okay next point number 4 is charge is invariant हमें आज पढ़ ले charge is invariant meaning already हमें discussion कर जाए does not depend upon velocity but mass is variant mass is relativistically variant
Okay, yes. Then last point we can say, last point we can write force between charges. Force between charges may be attractive or repulsive, but always remember force between masses always attractive. Okay, this is all about the difference between charge and mass. Yes, I hope it is clear to all of you. This is the difference between charge and mass. So all of you go through this content properly. So after this we have to discuss about the methods of charging. Yes, okay. So वीडियो को जदि स्लो आसूची वीडियो साउंड बहुत स्लो सुयो तो तुम्हें स्पीड टी एनहांस करी वीडियो को लेक्चर को देखिपर. ओके, सो फर्स्ट चैप्टर इज वेरी इंपोर्टेंट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू स्केलर क्वांटिटी एज वेल एज वेक्टर क्वांटिटी ऑल्सो. तो मैक्सिमम वेक्टर कॉन्सेप्ट अच्छे एथे, बी केयरफुल. ताको भी फर्स्ट ईयर कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे रिकल करके हमको आपको जावाक पड़ो. ओके, सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे.